यस सर, हो गया। ओके, तो डायग्राम में है, इस बार से हेडिंग डाल दो, इसका लिख दो मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज की डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन लिखी थी क्या मीटर ब्रिज की? लिखनी है, लिखो डेफिनेशन। देखना, मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस, मीटर ब्रिज is a device, meter bridge is a device which is used, meter bridge is a device which is used to measure, which is used to measure the unknown resistance of a resistor, unknown resistance of a resistor, ठीक है, unknown resistance of a resistor, right? प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल। सर हाँ बोलो। हाँ सर, मैं अभी आया था, रिपीट कर दोगे? क्या? It is a device which is used to measure the unknown resistance of a resistor, unknown resistance of a resistor. Okay, आगे लिखना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोलो। Its working is based on the principle of Wheatstone bridge. Its working is based on the principle, its working is based on the principle, is based on the principle of Wheatstone bridge. Working is based on the principle of Wheatstone bridge. Okay, Wheatstone bridge, under which under balanced condition, in which under balanced condition R1 upon R3 is R4 is equals to R2 upon R3, which is the balanced condition, in which under balanced condition R1 upon R4 is equals to R2 upon R3. Okay, ये होता है। अब इसके ऊपर हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे? तो पहले लिखना वर्किंग, फिर वर्किंग के अंदर हम इसके ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। तो वर्किंग ऑफ अ मीटर ब्रिज, एक सेकेंड सॉरी, वर्किंग नहीं, पहले कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीटर ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीटर ब्रिज लिखो। It consists of a 1 meter long manganese wire, consists of a 1 meter long manganese wire of uniform सर कौन सी वायर? manganese, MANGANIN। मैंगानीज इज अ सब्सटेंस जो थर्मल कोफिशिएंट कम होता है, इसका मतलब हीट से इतना ज्यादा टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस अफेक्ट नहीं होता। ओके डन। It consists of usually 1 meter long manganese wire of uniform cross section, manganese wire of uniform cross section, stretched along a meter scale, stretched along a meter scale, ये देखना ना मीटर स्केल के along लगाया हुआ है, along a meter scale, fixed over a wooden board, fixed over a wooden board, over a wooden board, wooden board, and its ends are connected, ये ends जो हैं, and its ends A and B, this end is A and this is B, its ends A and B, its ends A and B are connected, ends A and B are connected to TO वाला 2, connect to फिर 2, connected to two L-shaped copper strips, L-shaped copper strips, ठीक है, full stop, full stop. A thick copper strip is placed in between, a thick copper strip, this one, thick copper strip is placed in between two L-shaped strips, two L-shaped copper strips,
L-shaped copper strips so that two gaps, left gap and right gaps are created. So that two gaps, left gap and right gap is created or are created. Left gap and right gap are created. Are created. Okay. Done. Yes, sir. Okay. So इसमें देखना, in the left gap unknown resistance is placed. In the left gap unknown resistance is placed, and in the right gap right gap known resistance is connected. इसमें अननोन रखा है, इसमें नोन रखा है, हालांकि दोनों में इंटरचेंज भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर। उसमें तुमको रेशियो मिलता है, तो चाहे इसमें नोन रखो उसमें अननोन, चाहे उसमें नोन इसमें अननोन। कुछ बुक्स में इसमें अननोन रखा है, कुछ बुक्स में इसमें अननोन रखा है, डज नॉट मैटर। हम इसको आर एल जी और आर आर जी के फॉर्म में करेंगे, तो ज्यादा उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ओके, दिस इज इट। बस एक लास्ट लाइन। अ बैटरी इज कनेक्टेड, a battery is connected across the wire through a variable resistance and a key. Through a variable resistance and a key. Variable resistance and a key. Okay? This is it. आगे लिखा है working. Working में लिखा कर दीजिए। लास्ट लाइन क्या सकता है? A battery is connected. A battery is connected across the wire through a variable resistance and a key. Through a variable resistance and a key. Variable resistance and a key. Thank you, sir. Okay, right. Working लिख लो आगे सर। Working में लिखना, after taking out suitable resistance या after putting a suitable resistance in the right gap and switching on the circuit the jockey is moved over the wire to find the राइट null गैप के बाद क्या बोला आपने? right gap, and the key is switched on. Jockey is slide over the wire and the key is switched on. Jockey is slide over the wire, ठीक है, over the wire, right, to find a null point. अब null point क्या होता है? ब्रैकेट में लिखना, the point where galvanometer shows zero deflection. The point where galvanometer shows zero deflection. Galvanometer shows zero deflection. Okay, so shows zero deflection, full stop. Let this point is found at a distance of L centimeter from A and 100 minus L centimeter from B So according to balanced condition, यहाँ पे ध्यान दो, according to balanced condition of Wheatstone bridge, Wheatstone bridge की balanced condition क्या कहती है भाई? Balanced condition of Wheatstone bridge says कि resistance of left gap divided by resistance of the wire of length L, resistance of R gap divided by resistance of 100 minus L. This one is clear. So can we write it as this RRG को नीचे ले आए, RLG divided by RRG is equals to RL divided by 100 minus L. ये बना,
तो अगर हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करें तो ये आएगा आर एल जी डिवाइडेड बाई आर जी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल क्या होगा रो एल बाई ए और रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल क्या होगा रो 100 माइनस एल बाई ए। तो रो से रो कैंसिल और ए से ए कैंसिल, so we get RLG upon RRG यानी resistance of left gap divided by resistance of right gap is equals to L upon 100 minus L। और we can also say कि resistance of left gap जो हो गया, बेटर है कि ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखो, बट इन केस यहाँ पर हम करके दिखाना चाहते हैं ये कर सकते हैं L upon 100 minus L into में R, so that's how we can calculate the unknown resistance। Okay, do it। This is the final formula for मीटर ब्रिज। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म, ठीक है। पहले पोटेंशियोमीटर कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से इकट्ठा दोनों के क्वेश्चन साथ में मिला के कर लेंगे। ओके ओके एवरीवन, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो पोटेंशियोमीटर, फिर दोनों के क्वेश्चन साथ में मिला के कर लेंगे। पोटेंशियोमीटर हेडिंग डाल दो। Each other on a broad wooden board by the side of a meter scale. This wire is generally made of eureka or manganine and is stretched along a wooden board with its ends fixed to thick copper strips. जो हमने मीटर ब्रिज के अंदर वायर ली थी वो सिर्फ 1 मीटर लेंथ थी, लेकिन ये 1 मीटर के 4 वायर्स को ऐसे फोल्डेड फॉर्म में रखते हैं ताकि ये जितना लंबा वायर बनेगा उतना बेटर पोटेंशियोमीटर होगा हमारा, ठीक है। The end A reads 0 centimeter and the length of the wire between A and B is 400 centimeters. The wire is connected to a source of अब इससे मेजर क्या करते हैं, जैसे मीटर बेस से हम मेजर कर रहे थे, मीटर बेस से क्या क्या चीज डिटरमाइन कर रहे थे, मीटर बेस यू आर यूजिंग टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस, है ना। बट पोटेंशियोमीटर का यूज हम करते हैं, इसके मल्टीपल यूजेस हैं, 2-3 यूजेस हैं। क्या क्या हैं, इसके अंदर हम एक अननोन सेल का रेजिस्टेंस पता, उस अननोन सेल का ईएमएफ पता करते हैं, ठीक है, या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करते हैं। दिस इज द मेन पर्पस फॉर दिस। तो सेल का ईएमएफ या फिर उसका रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। constant EMF through a rheostat, an ammeter and a one-way key K. A galvanometer is connected between the end A of the wire and the jockey or slider S. Principle: when a current flows through a wire of uniform thickness and same composition, potential difference between its 2 points is directly proportional to the length of the wire between the 2 points. V is directly proportional to L, or V is equal to KL, where K is the constant of proportionality called the potential gradient. A potentiometer works on this principle. If we plot a graph between V and L, a straight line graph is obtained. Comparison of EMF of two cells. A potential. ये समझो भाई, तो यहाँ पर 2 सेल ले रखे हैं, ये E1 और E2। ये जो बड़ा वाला सेल है दिस इज नोन एज ड्राइविंग सेल एंड देयर आर 2 सेल्स E1 एंड E2। तो यहाँ पर ये इस सर्किट के थ्रू हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है एंड गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, जॉकी से। तो व्हेन दिस जॉकी स्लाइड ओवर हियर, जितनी ज्यादा लेंथ पे हमारा नल पॉइंट मिलेगा, इसका मतलब उतना ज्यादा उस बैटरी का ईएमएफ है। ये कैसे होता है ये भी समझाऊंगा बोर्ड पे, बट ये सब ये ध्यान रखना है जितना ज्यादा ये जॉकी का डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा नल पॉइंट का डिस्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा हमारी E1 और E2 की वैल्यू होने वाली है, उतना ज्यादा ईएमएफ की वैल्यू होगी। ओके, सो व्हेन जॉकी इज स्लाइड ओवर हियर वी फाइंड वैल्यू ऑफ लेंथ। एक लेंथ की वैल्यू निकालेंगे हम इसके लिए और एक लेंथ की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए, दोनों के लिए अगर निकलेगी, एंड देन वी कैन कंपेयर द लेंथ कि किसकी लेंथ ज्यादा है और किसकी लेंथ कम है। बात समझ आई? Potentiometer can be used to compare the EMFs of two cells. For comparing the EMFs of two cells, arrange the cell as shown. The EMF of the driving battery is constant
and more than that of given experimental cells E1 and E2. The positive terminal of the cells E1 and E2 are connected to the zero end terminal A of the potentiometer, whereas the negative terminals are connected through a two-way key to a galvanometer and a jockey. The measurement of EMFs is carried out in two steps. Close the main key K and the key K1 so that the cell E1 comes into circuit. The jockey is moved gently along the potentiometer wire AB till a point is obtained where the galvanometer shows no deflection. Let this point J be at a distance L1 from the zero end. At this point, E1 is directly proportional to the length of the balancing wire. E1 is equal to K into L1, where K is the constant of proportionality. Click on the keys K and K1 to open the circuit. Now close the main key K and the key K2 so that the cell E2 comes into circuit. The jockey is again moved along the potentiometer to find the balancing point. Let this point be at a distance L2 from the zero end. At this point, E2 is directly proportional to the length of the balancing wire. E2 is equal to KL2. The EMFs are compared by dividing the two equations. E1 is equal to KL1 and E2 is equal to KL2. That is, E1 by E2 is equal to L1 by L2. ठीक है भाई, ये बात समझ आई क्या था ये? हाँ भाई, तो अब देखो जरा पोटेंशियोमीटर का पहले डायग्राम देखते हैं, फिर उसकी तीन वर्किंग है. पहला अननोन ईएमएफ कैलकुलेट करना, दूसरा ईएमएफ कंपेयर करना और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना. देयर आर थ्री एप्लीकेशंस ऑफ इट. तो जरा देखते हैं कैसे होता है. तो दिस इज अ वुडन बोर्ड, दिस इज अ वुडन बोर्ड, ओके. और यहाँ पर हमने एक टर्मिनल लिया है, वहां से एक वायर ये गया. एक सेकेंड, पहले एक स्केल लगा देते हैं. दिस इज अ स्केल, दिस इज अ स्केल. दिस इज इट. इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, वी टेक अ स्ट्रिप ओवर हियर. यहाँ पर ये कॉपर स्ट्रिप ले ली, यहाँ से हमने एक वायर यहाँ तक लेकर के गए एंड यहाँ पर अनदर कॉपर स्ट्रिप लगाई है एंड इस कॉपर स्ट्रिप से यहाँ से दिस इज द कॉपर स्ट्रिप. ये यहाँ तक ले आए हैं, ओके. एंड देन यहाँ से ये लेकर के गए, ओके. एंड देन यहाँ से वो जो वायर था फिर उसको और यहाँ तक लेकर के गए हैं. दिस इज द थिंग वी हैव डन. गॉट इट एवरीवन? तो ये 4 फोल्ड कर लिए, 1 2 3 4 400 मीटर का वायर हो गया हमारे पास. नाउ दिस सेल विल बी कनेक्ट. ये जो वायर है यहाँ से, यहाँ पर हम एक ड्राइविंग सेल कनेक्ट करते हैं.
ड्राइविंग सेल कैसे, इट विल लुक लाइक दिस। ये एक हाई पोटेंशियल बैटरी होगा एंड यहाँ पर जो है हम लगाते हैं इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड हियर वी विल प्लेस अ की जो कि हमारा मेन की होगा। गॉट इट। अब ऊपर का जो सेटअप है, जो ऊपर हमको कनेक्ट करना है, वो चीज बदलती रहेगी। कैसे बदलेगी? अगर हमको मान लो कि वी हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अ सिंगल बैटरी, सिंगल सेल। तो ये हमारा सिंगल सेल हुआ, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और फिर हमने जॉकी से नल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करी जो कि यहाँ मिला। अगर एक सिंगल सेल लगाना है तो जब हम दो सेल को कंपेयर करेंगे तो उसकी वर्किंग अलग होगी, जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे उसकी वर्किंग अलग होगी। नीचे वाला पूरा सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये ऊपर का चेंज करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं एवरीवन? गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यहाँ पर जो नीचे का पूरा सेटअप है दिस वन, ये चेंज नहीं होता, सिर्फ ऊपर यहाँ के 3 एप्लीकेशन है तो ऊपर वाली चीज बदल जाएगी बस। ठीक है, यहाँ वाली चीज बदलती है, बाकी नीचे ये सारा सेटअप दिस विल रिमेन सेम। ओके, तो इसका कैसे कैसे होता है जरा पहले इसको लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन लिख लो, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू इट्स वर्किंग। और वर्किंग में ये सारी चीजें आएंगी, तीन इसके एप्लीकेशन है। सर डायग्राम भी बना लेते। हाँ, डायग्राम पहले डेफिनेशन लिख लो फिर डायग्राम बनाना, ठीक है? तो potentiometer is a device which is used to measure an unknown EMF, which is used to measure an unknown EMF or potential difference, unknown EMF or potential difference accurately, accurately। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखो इसका। कंस्ट्रक्शन इसमें it consists of a long wire, long wire कितना ब्रैकेट में देना, 4 to 10 मीटर, 4 to 10 मीटर, 4 से 10 मीटर लंबा, 4 to 10 मीटर of uniform cross section and a material of high resistivity and low temperature coefficient, and a material of high resistivity and low temperature coefficient, okay, low temperature coefficient, such as constantan or manganin, okay, full stop। सर हाँ बोलो। सच एज कांस्टेंटन, कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट लिख के उसके आगे EN लगा दो, कांस्टेंटन और मैंगानिन, MANGANIN, कांस्टेंटन और मैंगानिन। डन। हो गया? यस सर। ओके, दिस इज इट। इसके बाद यहाँ जनरली द वायर, कोई नहीं अभी लिखो जब तक एंड हो रहा है। जनरली द वायर is divided